Good morning students. Today we are going to start chapter 5, that is complex numbers and quadratic equations. These are complex numbers. We have not studied about complex numbers. We have studied about real numbers. Real numbers are the combination of rational and irrational numbers. That we already in 10th standard you have studied what are real numbers. Okay. Now what are complex numbers then? Okay, just let this is the quadratic equation. Standard form of the quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c equals 0. If I want to find out the roots of this quadratic equation, how I am going to find out? By using quadratic formula, and that is Sridharacharya formula, also we say quadratic formula or Sridharacharya formula. So it is minus b plus minus root d by 2a, where d is equal to what? Your b square minus 4ac, and we say we get real roots. When we get real roots we get if d is greater than 0 or equal to 0, d is, but roots don't exist if d is less than 0. अगर d नेगेटिव आता है, मीन्स if b square minus 4ac gives you negative number, then roots don't exist. तो in that case what are the roots? अगर सपोज हमारी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अवर्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0. फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला, दैट इज योर x इक्वल माइनस b. यू नो a इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x 1, c इज इक्वल टू 1. So what will be the formula, and you calculate d. d is what? Your b square minus 4ac. So d will be what? Your b square 1 whole square minus 4ac. So it will be your minus 8. It is minus 7, which is less than 0. Negative आ रहा है means real roots don't exist. So what will be the roots of this one? This one roots will be minus b. Minus b means minus 1 plus minus root d minus 7 by 2a. That is, so roots are minus 1 plus minus root minus 7, 4. Are not real roots. These roots are called complex roots. तो complex root के लिए एक new that is notation is there. What is that? That is called root minus 1 is called iota. इसको क्या बोलते हैं? Iota. Imaginary number, or we call it imaginary number. To get the roots which will be now not real roots, will be called complex roots. तो उसके लिए हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, एक हमने इसका सिम्बॉल निकाला, रूट माइनस 1 वी हैव इंट्रोड्यूस. रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, और वी कॉल इट इमेजिनरी नंबर. सो अवर कॉम्प्लेक्स रूट्स विल बी x इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस, आई कैन राइट इट रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 बाय वॉट 4. सो इट विल बी माइनस 1 प्लस माइनस root 7 iota by 4. These are called complex roots. So this kind of equation, when d is less than 0, can be solved, but roots will not be real. Roots will be complex roots. Correct or not? These are complex. So by introducing a new imaginary number, that is called iota, that is root minus 1. Okay, suppose you have one more example, and x square plus 1 equals 0. This is the equation. So what will be the roots of this quadratic equation? You will say x square equal minus 1. अब अगर ये रियल नंबर होता, x इज़ अ रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते इस केस में. तो व्हाट विल बी द रूट्स विल बी x इक्वल प्लस माइनस रूट माइनस 1. तो रूट माइनस 1 हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? आयोटा. तो रूट्स आर नाउ कॉम्प्लेक्स रूट. Plus iota and minus iota, plus iota and minus iota are called complex roots. Okay, so quadratic equation for the complex roots. So now I need to introduce a new kind of number, that is called a complex number. Complex number is denoted by a z, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? x plus iota y. This is called a complex number. We are going to introduce now new numbers, in which part will be their imaginary part. So we will be calling x is what? X is real z. Real z मतलब real part. ये एक real number होगा. X will be a real number. So it is real part of z. And y is called imaginary z. Imaginary z हमेशा किसके साथ होगा? आयोटा के साथ. तो ये हमारा क्या है? Imaginary z, y. And x is my real z. Okay, so this is called a complex number. Z equal, for example, this is your z equal 3 plus 4 iota.
it's a complex number. Okay, it's not a real number, it's a complex number because iota is there. So I am going to tell you now how we are going to study about the powers of iota. What that we are going to study? Powers of iota. Very important topic and interesting topic. Just this was a basic. Now you say powers of iota. What is powers of iota? Iota means what that your iota is this just I in the. So फर्स्ट इज व्हाट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1. ये तो बेसिक कंसेप्ट है. आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1. नाउ आयोटा स्क्वायर इज व्हाट योर्स -1. पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है. क्यों कंडीशन है? क्योंकि अगर आप कह रहे हो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर है तो आप क्या कह रहे हो रूट -1 इंटू रूट -1. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी. उसके अकॉर्डिंग तो आपका क्या हो गया? -1 इंटू -1. इट शुड बी वॉट +1. ये तो +1 आना चाहिए बट हम बोल रहे हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल -1. तो दिस रूल इज वैलिड फॉर इट इज़ नॉट वैलिड when a is less than 0 and b is also less than 0, then this rule is not valid. तो हमारे दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव है. तो ये रूल वैलिड नहीं है. इसलिए आयोटा स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 1. आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1. पर और तीनों कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए ये रूल वैलिड है? इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0, b इज़ ग्रेटर दैन 0. इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0 बट b इज़ लेस दैन 0, एंड इफ़ a इज़ लेस दैन 0 and b is greater than 0. For these three conditions this rule is valid. Okay, where a and b are your real numbers. This is valid. But कब valid नहीं है? जब दोनों नेगेटिव नंबर है. तो that's why this rule will not be followed and we will get what? Iota square equal -1. आयोटा स्क्वायर इक्वल वॉट दैट योर स्क्वायर कर दो. स्क्वायर में क्या होगा? अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. करेक्ट. और इट विल बी कमिंग योर -1. नाउ थर्ड पावर इज आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर माइनस है, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा. एंड आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा रेज़ टू पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1. वेरी इंपॉर्टेंट 1. यानी आप इसको लर्न कर लो. व्हाट इज दैट योर आयोटा is equal to root -1, iota square equal -1, iota cube is minus iota, iota 4 is equal to 1. ओके. तो अब कोई भी पावर ऑफ आयोटा यू कैन कैलकुलेट. सपोज अब सिंपल सी बात है आयोटा 9. तो आयोटा 9 कैसे मैं कैलकुलेट करूँगी? दैट इज़ योर आयोटा 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 + 1. 4 इंटू 2 + 1. सो यू आर गोइंग टू आयोटा, इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं 4 इंटू 2 डॉट आयोटा. पावर्स को स्प्लिट कर सकते हैं. यस, सेम ही आ जाएगी 9. और इसके बाद आयोटा 4 होल स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा 4 हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. तो ये तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? 1 इंटू आयोटा. आंसर इज आयोटा. डोंट वरी. ओके, सिंपली 1 मोर. सपोज आयोटा 5 है तो आपने क्या किया? आयोटा 4 इंटू आयोटा. आयोटा 4 क्या है? 1 इंटू आयोटा आयोटा. आंसर आ गया. अगर मुझे 1 बाय आयोटा कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर. रेशनलाइज कर दिया. आयोटा स्क्वायर इज -1. आयोटा स्क्वायर इज -1. सो आंसर इज माइनस आयोटा. अब इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं. लाइक कोई भी बड़ी पावर है. सपोज हमारा ये आयोटा रेज़ टू पावर m है. तो मैं इसको किस में ब्रेक करूँ? मैं इसको करूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4q + r. किससे डिवाइड कर रही हूँ? 4 से डिवाइड कर रही हूँ. तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4q + r. देन दिस पार्ट, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं ब्रेक करूँगी 4q डॉट आयोटा आर. मैं लिख सकती हूँ इसको 4q डॉट आयोटा आर बाय स्प्लिटिंग एक्सपोनेंट रूल. एक्सपोनेंट रूल से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया. ऐड करोगे तो बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड, ये सेम आ जाएगा. अब क्या कर रहे हैं? आयोटा 4 होल पावर q डॉट आयोटा आर. अब ये आयोटा 4 क्या है? 1 है. तो 1 की कोई भी पावर आएगी तो बेटा 1 ही आएगा. तो ये इसमें कन्वर्ट होएगा आयोटा रिमाइंडर. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल